Good evening and welcome to this special presentation right here on NDTV. It's election season, many states have gone to polls, but there is this huge state called Uttar Pradesh which is going to see its fourth phase of polling on the 23rd of February. And also the state of Manipur, which will also be going to polls. Now lots of things have happened, lots of comments have been made, and while all of this is happening, curtains on the campaigning for the fourth phase also happen. I'll be joined in by two of my colleagues, Alok Pandey, on how last minute campaigning was like, who said what, and then Saurabh Shukla, who will tell us what to expect next. The big bang rallies that are going to take place or roadshows that are going to take place now that COVID restrictions are being reduced significantly. Let me first go across to Alok now. Alok, good evening. Lots of rallies and roadshows that took place late night yesterday of Yogi Adityanath in Lucknow and also Akhilesh Yadav, and then more roadshows today on the outskirts of Lucknow. Just take us through some of the things that happened, some of the comments that were made in these rallies and roadshows. Well, thank you so much, Sanket. Before I speak about that, I'd like to give our viewers an overview of the fourth phase of the UP election. So this is happening across 59 districts in mostly central UP and also parts of the Terai region where Sanket is, which is bordering Nepal. Now, of these 59 seats, the BJP and its allies had won 51 in the 2017 election. So it's a high-stakes battle for the BJP and also for the chief contender, the Samajwadi Party, that is hoping to better its performance by leaps and bounds in this phase, like in the earlier phases of the UP election. Now, about campaigning, I think the one thing that has stuck out in this phase of the campaign has been this association by the BJP of a party symbol, the Samajwadi Party's poll symbol, the cycle, with terror. This started yesterday with the Prime Minister actually going ahead and making these remarks in the context of the Ahmedabad serial blasts and the convictions in them, saying that the initial bombs in Ahmedabad were placed on cycles, and he wondered why. Now that led to a strong response from the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, who first tweeted that an insult to the cycle is an insult to the nation, and then also went ahead and spoke about it at a rally earlier for the campaign that has ended, where he said, he spoke about how this was something the BJP was indulging in, this kind of rhetoric, Sanket, because they were underconfident that they were going to be wiped out. So I think that was the main point, this aggressive campaign, this campaign with so many associations to terror, accusations by the BJP against the Samajwadi Party was something that stuck out in this phase. Of course, today was the last day. I covered Priyanka Gandhi Vadra's roadshow in Lucknow, which is also a seat, Uttar Pradesh's capital, that is going to the polls in the next phase. Yogi Adityanath held rallies, Amit Shah was here, Akhilesh Yadav went around. So all the big guns were campaigning till late in the evening before the silence period started. But like I said, I think this phase has seen an acrimonious campaign. Some are saying that, unnecessary associations or at least controversial associations by the BJP of the Samajwadi Party with the terror attacks. So how that plays out in the vote will be something that will be interesting to see, Sanket. All right. Absolutely. Alok Pandey, many thanks for joining us with that update on the nature of the campaigning so far, the comments that were made, and in just a short moment we'll make you listen to that cycle comparison and the cycle comment of the Prime Minister. Saurabh Shukla is also with us. Saurabh, can you take us through the big campaignings that are going to happen, the big rallies or road shows that are expected over the next few days? Absolutely, Sanket. Now election will shift from central UP, and we call it Awadh, to Purvanchal, towards Purvanchal, and the few important seats which are going for the poll. Number one, Sirathu, where Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Keshav Maurya, is fighting, and Samajwadi Party has placed Pallavi Patel, sister of Anupriya Patel, and that is going to be a very interesting fight. Sanket, tomorrow Akhilesh Yadav will be in Sirathu and he will campaign for Pallavi Patel. And very interestingly, Sanket, today, Pallavi Patel's sister Anupriya Patel, who is close ally with BJP, she held
a rally in Sirathu in favor of Keshav Maurya. So sister versus sister in Sirathu. And apart from that, now Amethi is going to poll in fifth phase. We will see Priyanka Gandhi campaigning, and one credible source of mine in Congress is saying that Rahul Gandhi might also come for campaigning in Amethi, as Amethi, he was member of parliament from Amethi last time. Last time he lost to Smriti Irani, but he will come back due to emotional reasons as well. Sanket, Prime Minister Modi is going to hold a rally in Barabanki. I was in Barabanki today. A major stronghold of Samajwadi Party. BJP swept Barabanki last time. BJP had won 5 seats out of 6 in Barabanki. So very crucial seats are going for the poll. In fact, Sanket, you and I were talking about Ayodhya also, very important Ayodhya, where a lot of buzz that Yogi Adityanath might contest from Ayodhya, but that did not happen. Current MLA Ved Prakash Gupta is standing from there, and he's getting very strong opposition from Pawan Pandey. We call him Tej Narayan Pandey as well. And apart from that, seats of Prayagraj, where unemployment is a major issue, and we will see Prime Minister Modi campaigning in Barabanki, Prayagraj. Yogi Adityanath is going to Prayagraj in 2 days. So a lot more is expected on the 5th and 6th place. This elections will move towards Purvanchal, where issues of caste, as Samajwadi Party has a plan for this phase, where we'll see more of Rajbhar, more of Swami Prasad Maurya, who are talking about the caste-based census and reservation. So a lot is expected, and we'll see Prime Minister Modi will hold more rallies. In fact, Prime Minister Modi is going to stay in Banaras for a few days. Banaras will also poll in coming phases. So very interesting elections, Sanket. Absolutely, Saurabh. Nice summary of what one can expect in the next few days. Well, election campaigning in Uttar Pradesh has only just begun. 3 phases gone, 4 more to go. 23rd, the key contest for the central districts of Uttar Pradesh. But the campaigning is now going to move eastwards as these phases come up for elections. Thank you very much, Alok, as well as Saurabh, for joining us. And as Alok was talking just a short while ago of what the Prime Minister said, he made a very, his assessment would be a light-hearted comment, likening the fact that the Ahmedabad terrorists, convicted terrorists, used cycle bombs to the election symbol of the Samajwadi Party, the cycle. Now that has led to a huge backlash from the supporters of the Samajwadi Party. Comments from the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav. Let's first listen in to what the Prime Minister had to say in his rally in Unnao. लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। डबल इंजन का मतलब आप जानते हैं ना, केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में जब दोनों एक साथ चलते हैं तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से विकास बढ़ता है। आपको बुलेट ट्रेन चाहिए या पंचर वाली साइकिल? बुलेट ट्रेन पर विश्वास करते हैं ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी वही डबल इंजन की बुलेट ट्रेन के रूप में काम कर रही है, स्पीड बढ़ाएगी सबकी। कल मैंने सुना प्रधानमंत्री जी आके बोले देश में जो साइकिल चलाता है सारे आतंकवादी हैं। मैं जितने साइकिल चलाने वाले हैं भाई साहब, ये गरीबों के ऊपर चोट है। गरीबों को, सारे गरीबों को प्रधानमंत्री जी आतंकवादी बोल रहे हैं। जितने साइकिल चलाते हैं सारे साइकिल चलाने वाले, जब बटन दबाने जाओ तो बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल चलाने वाले आतंकवादी हैं। All right, and Sonia Gandhi, the interim president of the Congress party, also spoke out. She attacked and lashed out at the Yogi Modi combine, which, the Bharatiya Janata Party leaders now say is the new MY in Uttar Pradesh.
She said that they created a situation that so many people lost their jobs and were set on foot to go back to their native towns. Let's listen in to what she had to say. लॉकडाउन में आपके काम धंधे बंद हो गए। आप सब ने मीलों पैदल सफर करने की पीड़ा खुद झेली है, मगर मोदी योगी सरकार ने एक गैर जिम्मेदार सरकार का परिचय देते हुए आप सबकी तकलीफों के बावजूद मुंह मोड़े रखा और आंखें बंद रखी। हम आपके क्षेत्र के लिए कई विकास योजनाएं लेकर आए थे, लेकिन मोदी योगी सरकार ने उन सभी पर रोक लगा दी। Now we're in Lakhimpur right now, and through the day we spoke to a number of people, from farmers to laborers to people in the villages to women, and one got a sense that people have not forgotten the events of the 3rd of October 2021. Lakhimpur goes to polls on the 23rd of February. We were in Lakhimpur town where we spoke to a few laborers. Let's try to play out this conversation and you will get a sense of what all these laborers are upset about. हम इस वक्त लखीमपुर में हैं और ये यहाँ का सदर चौराहा है जिसको लेबर चौक भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर कुछ महीनों पहले टेनी पुत्र का जो कांड था वो सुर्खियों में छाया था। क्या वो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें 2017 में पूरी तरीके से बीजेपी की एक लहर आई थी। उससे पहले 2012 में बसपा और सपा भी थे, लेकिन 2017 में पूरी तरीके से बीजेपी हो गया। लखीमपुर के दिल में क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक लेबर चौराहा भी है, यहाँ लोग एकत्रित होते हैं, लखीमपुर की अलग अलग जगहों से आते हैं रोजगार की तलाश में। क्या आपके लिए पिछले 5 साल में या कुछ समय में क्या तकलीफ आपको हुई है? हमको कुछ नहीं मिला है, ना तो हमको आवास मिली है, ना राशन कार्ड बना है, ना कुछ। हम मजदूरी करते हैं और मजदूरी से जो है खर्चा वही चलता है मेरा। तो यहाँ सुबह कितने बजे आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं 8:30 बजे, 8:30 बजे आते हैं हम। और उसके बाद फिर इंतजार करते हैं? इंतजार करते हैं 11 साढ़े 11 बजे तक का, फिर घर को चले जाते हैं। कभी कभी मिल जाता है काम। और कितना मिलता है रोज? 300 मिलता है। 300 रुपया अगर कोई काम में ले लिया तो? हाँ, जब काम ले लिया तब तो 300 मिलेगा। वैसे काम मिलते ना तो नहीं मिलते काम। अच्छा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। लखीमपुर किस कारण से सुर्खियों में आया था? किसानों के ऊपर जीप चढ़ गई थी। आपको लगता है कि वो लोगों के मन में है ये बात, ये जो हुआ? है सबके मन में है। आप कहाँ से? लखीमपुर से? लखीमपुर से हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं लोगों के दिमाग में वो चीज है अभी? है। वो जाएगी थोड़ी ना, इतनी जल्दी थोड़ी ना जाएगी। टेनी महाराज के भैया ने जो है ये कांड किया था वही। टेनी महाराज बुला रहे होंगे? महाराज तो वही है वो जो। महाराज इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी दबंगई है और नहीं महाराज बोलने, इनकी मजबूरी है महाराज बोलना। अब क्या किया जाए? नहीं, जैसे जो हम लोग केवल यही अपने वोट का चोट कर दे सकते हैं इनको, वही वोट का चोट इनको 10 मार्च को दिखाई देगा। यहाँ कोई रोजगार नहीं हुआ है। रोजगार 11 बज गया। अगर रोजगार होता तो हम लोग यहाँ खड़े होते चौराहे पे। रोज आपको 200 लेबर आपको यहीं खड़ा मिलेगा। रोजगार की बहुत समस्या है यहाँ। लेबर पर डे जो है वापस जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या ये 2012 से 2017 में भी यही स्थिति थी या ये अभी हुई है? उस दौरान में ये स्थितियाँ नहीं थी, उतनी स्थितियाँ नहीं थी। उस दौरान में इतने प्रोजेक्ट चल रहे थे, छोटे छोटे बड़े बड़े जो कुछ भी चल रहे थे, उसमें एक कुछ न कुछ लोगों को रोजगार मिलता था। तब 300 की दिहाड़ी थी, वही दिहाड़ी आज भी है। लेकिन आज ऐसी मजबूरी हो जाती है कि लोगों को 250 270 में भी करना पड़ जाता है। मतलब आज के 5 साल पहले जो स्थितियाँ थी उससे कहीं बदतर स्थिति है आज। महंगाई भी बहुत है। जैसे कि आज कड़वा तेल हम लोग 200 रुपए किलो खरीद रहे हैं, यही जो है हम 100 रुपए में खरीदते थे। और जो सिलेंडर जो आज 1000 रुपया छू रहा है, मोदी जी ने कहा था सब्सिडी आएगी, सब्सिडी भी बंद कर दी। और 1000 रुपया गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? 200-250 की मंजूरी हम करने वाले आदमी, जो लागत लगती है खेती में, वो खेती से निकल नहीं पा रहा है। अगर जो थोड़ा बहुत फसल होती भी है वो गाय और साठ चढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी तो बड़ी उम्मीद से है कि इस बार ये जो एक हवा बनाई जा रही है बेरोजगारी की,
तकलीफ की, ऐसा कुछ नहीं है, जनता उन्हीं के साथ है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर रियलिटी है जो चीज़ है बेरोजगारी का, ये इसमें हवा नहीं बनाई जा रही है, ये चीज़ें रियलिटी है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर। 10 मार्च को सर इसलिए सबक सिखाएंगे, सर इतनी बेरोजगारियां हैं, कहीं पर भी काम मजदूरी का काम ढूंढने लगो तो मजदूरी का काम मिलना जो है बहुत दिक्कत है। मजदूरी ढूंढने के लिए दिक्कत है। अब आप यहाँ पे क्या भैया? ये दिन मिले 4 दिन मिलते हैं काम। हाँ। एक दिन मिलता है काम इनको, 4 दिन नहीं मिलता। यहाँ से एक दिन काम मिलता है, 4 दिन नहीं मिलता है। यहाँ पर लेबर चौक जो है सदर इलाके में लखीमपुर में, उसमें आप देख सकते हैं अलग अलग गांव से ये वो लोग हैं जो कि रोज रोजगार की तलाश में आते हैं, और उनके दिल में क्या है वो हमने आपको सुना दिया। लखीमपुर में प्रतीक, ओसामा शाब और सचिन गुप्ता के साथ संकेत उपाध्याय, एनडीटीवी। You know, the saddest part was many of them were farmers, and because of the stray cattle menace and the very bad return on investment, many of them were turned to or had to take to this, becoming the daily laborers, daily wage laborers, and they were highlighting their plight, that they come to that chalk every day, get employed only for 1 day, and have to go without a salary for 4 days. What do they earn? Around 270 to 300 rupees per day. Exactly the amount they were earning 5 years ago. Will this be a factor, along with the fact, as many of them mentioned, that the jeep mowed down the farmers? Since we are in Lakhimpur, we also managed to go to a village which interestingly says that there will be no voting in that village. A village of 700 people says we are not going to vote. Why? Let's find out. तो लखीमपुर में एक गांव ऐसा भी जिसने ये तय किया है कि इस चुनाव में हम वोट ही नहीं डालेंगे। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं गांव वालों से। इस गांव का नाम है चितिहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका शुभ नाम और क्यों वोट नहीं डालेंगे? सत्यनारायण यादव। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी अहम समस्या है कि हमारे गांव की जमीन लगभग 80% लोगों की रेलवे लाइन के उस पार है, और लगभग 1-1.5 साल हुआ जा रहा है। तो वो रेलवे लाइन का क्रॉसिंग का रास्ता जो है हमारे गांव से लगभग 4-5 गांव का रास्ता वो है लाइन के उधर जाने के लिए, वो रास्ता बंद कर दिया गया। पहले तो लाइन के खंभे गाड़े गए उसमें, फिर लोगों ने जब इतराज किया तो किसी तरह से वो खंभा हटा करके अपना आवागमन होता रहा। डल्ला ट्रैक्टर ट्राली बंद हो गया, आना जाना पैदल या साइकिल से आना जाना बराबर चलता रहा। उसके बाद वो रेलवे विभाग वालों ने जेसीबी लाकर लगभग 10 फीट गहरी 8 फीट चौड़ी नाली खोद दी, इसमें रास्ता खोद दिया गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप है। और हमारे गांव की खेती जो उधर पड़ती है, तो आप कैसे जाते हैं वहाँ? उधर लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर बेलायन से रास्ता है। और पहले कितना किलोमीटर था यहाँ से? पहले यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता था, अब 5 किलोमीटर हो गया। 5। और इधर तिकुनिया से जाते हैं तो कम से कम 12 किलोमीटर रास्ता है। हमारे गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक डीएम को और एसडीएम को, डीआरएम को कई बार शिकायत पत्र पहुंचाए गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनावी मौसम में ये कह देना कि वोट ही नहीं देंगे, ये क्यों? ये इसीलिए, जो हमारा रोड नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। जब रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने वोटर हैं इस गांव में? लगभग 700 वोटर है। 700 वोट नहीं पड़ेंगे यहाँ से अगर वो सड़क नहीं खुलती। सड़क नहीं खुलती। क्या चीज? बिल्कुल नहीं पड़ी है। हाँ, जो हमारे लोग रास्ता ही नहीं तो वोट डाले फायदा क्या है? कोई हमारे लोगों ने सुनता ही नहीं। जब से रेलवे लाइन अंग्रेजों के जमाने में बिछी रहा है तब से रास्ता है। लगभग 135 साल हो गया है रास्ता चलते चलते। हम लोग अब मान के चलो किसी नेता से, सांसद या विधायक से कहा जाता है तो वो लोग यही कहते हैं यहाँ रास्ता ही नहीं था, आप लोगों ने बना लिया होगा। 1985 में पुल बना रहा है, तब का खड़ंजा लगा है बाकायदा डगरा के ऊपर, वो सब खोद करके हटवा दिया गया। हमारे लोगों ने निकासी बंद है। चलिए, तो अब ये देखना होगा कि आपने ये जो अल्टीमेटम दिया है कि 23 फरवरी को आप वोट ही नहीं डालेंगे, तो इस पर अब क्या, अब तो बहुत कम समय रह गया है। तो समय रह गया कम, हम लोग नहीं वोट देंगे, बस सीधी बात है, वोट नहीं डालेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात हम चाहते हैं कि पहुंच जाए जहां पहुंचनी चाहिए, और उसके बाद फिर आप लोगों को जो तकलीफ है वो ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।